Hello and welcome to this Western Maharashtra special on Elections Unlocked, where we are starting our journey through this part of Maza Maharashtra from Baramati. Baramati near Pune, which is the citadel of the Pawar family, but a family that's been split apart in recent times, as indeed has been much of Western Maharashtra. Remember, this region accounts for around 70 of the 288 seats. Sharad Pawar, then as part of a united NCP, had done remarkably well in 2019 and also in 2024. The big question now, with Ajit Pawar breaking away several rebels, independents, and the BJP also making a headway, which way will the winds blow across Western Maharashtra? We're going to start our journey here in Baramati. But I'm joined here by a special guest, because joining me on the show is Sahil Joshi, our Mumbai bureau editor. And Sahil, editor of Mumbai Tak, has been tracking Maharashtra for years. Sahil, we were here, in April, May, before the Lok Sabha election. Then also it was Pawar versus Pawar in Baramati. And it's again Pawar versus Pawar. This time Ajit Pawar taking on his nephew Yogendra. Is this about Western Maharashtra now, about these family splits and who can manage them better? Yeah, it looks like that because, it's been a traditional rivalry. So one part is going on the other side, the other side gets the opportunity to come to Pawar and say that, okay, we will contest. But Baramati has surprised us. When Sunetra Pawar came as a candidate, it surprised everyone. She had never contested election. Ajit Pawar brought in the family in the political fight, and now... But Supriya Sule won that easily. Yeah. This time, it's now Ajit Pawar versus his nephew being propped up by Sharad Pawar. And across Western Maharashtra, we are seeing these family fights. In fact, Yogendra was seen for the first time when during Supriya Sule's campaign, when the Sunetra and Supriya fight happened in Lok Sabha elections. And suddenly now he becomes the assembly candidate from NCP, Sharad Pawar. So, this is very interesting about Baramati, that this had never happened before in Baramati in the earlier years. Okay, we are going to go and meet Yogendra in a moment, but the point, Sahil, is across Western Maharashtra. We were in Sangli, Vasantdada Patil's family. We are in Satara. You'll have Uday Singh Raje Bhosle's family. It seems that families run the show in Western Maharashtra. Always. And it's not only the known families, but it has percolated down at the level of Zilla Parishads and the local corporations as well. Everyone wants to put in their sons, daughters. Just neighboring constituency, Indapur. I mean, Harshavardhan Patil, his daughter is fighting the Zilla Parishad election. She has been chairman there. So everywhere we'll go and see that the same kind of what we call Parivar Vad in the Western Maharashtra politics. Okay, Parivar Vad in Western Maharashtra. In fact, BJP is also choosing those people who have elective merit, in that sense. Elective merit in that sense. So there's Parivar Vad everywhere in Western Maharashtra. Cause kaun sa Parivar jeetega ya kaun sa Pawar jeetega? Come with us as we try and find out. Come. I'm joined now by Yogendra Pawar, who is contesting, making his debut election here in Baramati, fourth generation Pawar, in a way. Let's be honest, you're taking on your uncle. This is a family fight. And that's why people feel that, why is this happening? Why are the Pawars splitting apart? Are you being used to take on Ajit Pawar as part of this war between Sharad Pawar and Ajit Pawar? Not at all. I think you know Mr. Pawar since many years, and I think anything that he does, he always does it in a positive way. So I don't think he will use somebody, especially not his grandson. The relation between a grandfather and a grandson is usually very different. And I don't think Pawar Sahab will do that. See, it's unfortunate, it's sad that it has come to this. But it would not have been like this if it would not have happened in the Lok Sabha. We had met in the Lok Sabha as well at Baramati at that time. And we spoke at length about, how these things are happening. But they say once the bullet is fired, you can't take it back. But you mentioned this is something like that. But you mentioned Lok Sabha, and interestingly, then it was Sunetra Pawar versus Supriya Sule. And then Sharad Pawar and to some extent Supriya seemed to hold Ajit Pawar responsible for putting up his wife against he was blamed for that, for making it a family war. Now Sharad Pawar or you and your father might be blamed. Why are you being put up against Ajit Pawar? I mean, are you responsible this time? Fair enough. See, today in this whole thing, I am a very junior member of the family, of the party. So I am a very small piece of the puzzle. If you want a better
real answer, you should speak to Mr. Pawar himself. He'll be able to give you. No, I spoke to him also. I spoke to him also, and he didn't seem to be clear on just what he said. New generation. What he did tell me, I think it's time for a new generation to take over. Now, that argument could be made then, that why is Ajit Pawar not given his why does it need to be against Ajit Pawar? Why does Yogendra need to be against Ajit Pawar for the new generation to come through? I got your point, but see, today, for many years, it was Pawar Saab and Ajit Dada that worked together, and that was their generation that worked together for, I think, close to 35 years until, whatever this split happened. And the new generation now is my generation. We are, as we say, millennials. So if we are coming into this field, I think it's good for why against your uncle? everybody. You see, the question is why should It's it be not- against it's your not- uncle? it's- You could have done it against anyone else. Fair enough. It's not that against uncle or anybody. It is somebody who has gone with the BJP, and always we've opposed the BJP ideology. We've always opposed the BJP, and because it just happens to be my uncle, that's the unfortunate part about it. No, but it's not a fight between the uncle, or it's not a family fight, at least not according to us. According So to what is the us, fight? it's an ideological fight. It's a fight for the Congress ideology or the NCP ideology or Pawar Saab's ideology against the Hindutva ideology of the BJP. Ajit Pawar sir ithe ale, if he meets you across the road and he says, what will you say to Ajit Dada? I'll not tell him anything. What will you say? I'll touch his feet and I'll ask him for his blessing. That's about it. Not for forgiveness. No, Not no, for what forgiveness. have I For done? taking him on. For fighting him. It's not, I'm not fighting him. I'm fighting the BJP. It just happens to be that he is being supported by the BJP. Okay, I'm going to leave it there, Yogendra. US returned graduate and has worked now in Baramati and is making his political debut. 50 years, the Sharad Pawar family has dominated Baramati. This time, whoever wins, it will be a Pawar. Correct. Whether it is Ajit Pawar or Yogendra Pawar, जो जीतेगा वो Pawar ही होगा, right? That's right. But it's also, it's not because of that. It's because the Pawar family has contributed a lot to the development of Baramati. Everybody has. Okay. And that's why the people of Baramati, they want somebody from the Pawar family, and specifically somebody supported by Mr. Sharad Pawar. Okay, we've heard from Yogendra Pawar. We'll of course get many more voices. कसे आहात? या बाजूला कोण आहे? अजित दादा. एकच वाद. आणि या बाजूला आदरणीय शरद पवार साहेब. इधर घड़ी है और इधर तुतारी है. अब ये बताओ, आप दोनों तो एक साल पहले तक एक परिवार था, क्या हो गया इतने जल्दी आप टूट गए? महाराष्ट्र में विकास करने के लिए अजित दादा ने महायुति में नहीं, ये महायुति में विकास के लिए या ईडी के डर से? सच बताइए. विकास के लिए. तो विकास के लिए आप मोदी जी के साथ जुड़ गए. जितने ज्यादा विधायक हैं वो तो इस तरफ चले गए हैं. क्यों? इधर गए इसके लिए कि हर एक को जो है लाभार्थी और आशा है कि मंत्री बनने की, और इन्होंने जो कहा कि ईडी के डर से नहीं या विकास के लिए, तो इसके पहले अजित दादा पवार साहब जो आदरणीय नेता भी है हमारे, लेकिन इनको अभी तक जो 3 मर्तबा उप मुख्यमंत्री बनाया, फिर से मंत्री बनाया, खासदार बनाया, गठ नेता बनाया, विरोधी पक्ष नेता बनाया, तब विकास क्यों किया नहीं? तो अभी 1 साल में विकास करने का है. अजीत पवार आपके नेता है कि नहीं, या शरद पवार है? पवार साहब मेरे नेता है और उसके बाद में अजित दादा, लेकिन ये 2 गुट जो होने से हर एक का जो मामला है कि ये विकास के लिए गए, तो विकास के लिए कोई गया नहीं. ईडी के डर से गए. हाँ, ये हम तो सामने नहीं विकास नहीं. इन्होंने कहा कि अगर विकास की बात है तो इतने साल से तो अजीत दादा उप मुख्यमंत्री रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, तो विकास का मतलब बताइए मुझे. वो टाइम भी विकास अजित दादा ने किया था. क्या विकास? सब विकास बारामती का, महाराष्ट्र का, और शरद पवार ने नहीं किया. उन्होंने आदरणीय पवार साहब ने भी किया. मेडिकल कॉलेज किया. ये मुझे बताइए, ये मानते हैं कि अजीत पवार भी उनके नेता है. आप मानते हैं शरद पवार आपके नेता है? हम भी मानते थे उनको.
और फिर उनके विरोध नहीं, हम विकास के लिए अजीत दादा के साथ में शरद पवार के साथ आपने धोखा नहीं किया, दगा नहीं किया। नहीं, हम उनके साथ हम उनका मान रखते हैं, लेकिन अजित दादा हमारा सम्मान है और हमारा नेता है, इसलिए हम अजित दादा के साथ ही पर रहेंगे। ये एक के साथ एक का मान रखते हैं, दूसरे का सम्मान रखते हैं और एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अपने घर में भी हमारे बड़ों का सम्मान रखते हैं, घर में ही लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। पेड़ का पत्ता गिरेगा ना तो पेड़ कुछ रूटेगा नहीं, पेड़ कुछ पत्तों को कहेगा नहीं। लेकिन ये मामला ये है कि शरद पवार साहब जो हो लीडर है, अजीत दादा अब रूट गए, जाएंगे उधर, लेकिन लगता है कि वो वापस आएंगे। आपको विश्वास है कि अजित पवार वापिस आएंगे? आ सकते हैं, जब वो सुबह सुबह जा सकते हैं शपथ विधि के लिए तो वापस भी आ सकते हैं। आप कह रहे हो भाजपा ने आपकी पार्टी को तोड़ा? यस, भाजपा ने हमारी पार्टी को पर तोड़ा। आपने तो तोड़ने दिया ना? नहीं, हमने तोड़ने नहीं दिया, ये इतिहास है, ये इतिहास है। नहीं, उनकी महत्वाकांक्षा, सबकी महत्वाकांक्षा है, शरद पवार की महत्वाकांक्षा है, अजीत पवार की महत्वाकांक्षा है, या आप लोग उसमें फंस गए? नहीं, फंस नहीं गए। जब दादा बताते ना कि काका मुझे ये दिक्कत है तो काका सुन लेते, काका जाने नहीं देते। एक दूसरे के दोस्त हो या दुश्मन बन गए? हम दोस्त है, दोस्त है, दुश्मन नहीं, दोस्त है, हम दोस्त। तो शेक हैंड्स करो। शेक हैंड, मेरे दोस्त है ये, हमारे दोस्त है ये। अरे बस, इलेक्शन विचारधारा लगे। अच्छा, विचारधारा अलग है। चलो, if you come to Satara, you have to try the misal and you've got to try the poha. So I've come to a place where you get both poha आणि मिसळ. मिसळ आहे ना? पोहा आहे, मला पोहा द्या आणि मिसळ द्या, थोडी दही. फर्स्ट क्लास मिसळ, पोहा, दही. And while the food comes, I'm going to do a quick tour here to find out what people have to say. नमस्कार, काय घेताय? मिसळ? सगळे यंग लोक आहात का? नोकरी आहे की नाही? आरक्षण पाहिजे की नाही? मराठा आरक्षण व्हायला पाहिजे, नाही व्हायला पाहिजे? झालं पाहिजे, झालं पाहिजे. पाहिजे. आता काय त्यांनी नोकरी आहे की नाही साताऱ्यात, की नोकरी मिळणं कठीण आहे? नोकरी भेटणं जरा कठीण आहे साताऱ्यात आता. जोर कोणाचा आहे पश्चिम महाराष्ट्रात, शरद पवारांचा की अजित पवारांचा? अजित पवारांचा. अजित पवारांचा जोर जास्त आहे. हो हो, अजित पवार आपल्या बीजेपी आणि शिवसेना बरोबर आहेत आणि आता सत्तेमध्ये असलेलं सरकार खूप चांगलं काम करतंय. दुसऱ्या बाजूला जे शरद पवार आहेत ते, शरद पवार जेव्हा मुख्यमंत्री होते, सत्तेमध्ये होते, तेव्हा मराठा आरक्षण देता आलं नाही त्यांना, याच्याबद्दल मराठ्यांचा विचार आला नाही. म्हणजे महाराष्ट्र डिवाइड झालाय, बट गया है महाराष्ट्र. बटायचं काम म्हणजे समाजात फूट पडायचं शरद पवारांची नीती आहे. आम्ही एकत्र आणायचं. अच्छा, शरद पवार ने बांट दिया है लोगों को. दिस इज अ लँड ऑफ रेसलर्स ऑल्सो. बॉडी आहे. तू काय कबड्डी प्लेअर आहे, रेसलर आहेस, काय करतोस? फिटनेस मॅनेजमेंट. फिटनेस मॅनेजमेंट. दे आर ऑल फिट हिअर. मला सांगा, तुम्ही फिट करून हे सगळं खाताय, ते सगळं ठीक आहे. इलेक्शन मध्ये काय होणार? एकनाथ शिंदे सर. Here is my dahi misal, perfectly done, my poha with limbu. Lots of people are saying that where is elections on my plate? As you can see, there's a bit of elections on my plate in this show too. And Maharashtra's politics is a bit like a misal, mixed. Hopefully, someone will eat the dahi as well. Enjoy. I'm in Satara. Dahi misal time. You can't come to Kolhapur and not visit a Kolhapuri chappal shop. कशा आहात? चप्पल आहे की नाही माझ्यासाठी? साईज माझा आहे 10. काळ्या रंगाची आहे. आणि दुसरी नाही, हे आहे या रंगाची. व्हेरी नाईस. आय एम लुकिंग ओके. We are in Kolhapur, a city in Maharashtra that has always prided itself on the progressive traditions of the great Chhatrapati Shivaji Maharaj, Shahu Maharaj legacy. But in recent times, Kolhapur, like many other parts of Maharashtra, has been tangled in sharp religious and caste divisions, and the political fractures at times have been out in the open. Which is why I thought I would ask the people of Kolhapur the big question. Do the politicians of today simply pay lip service to the legacy of the great Chhatrapati Shivaji Maharaj? Come with me. कैसे आप सगळे? ये बताइए, शिवाजी महाराज का जो आदर्श है,
आदर्शवादी नेता समझे जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आज के नेता उस आदर्श पे रह रहे हैं कि नहीं महाराष्ट्र में? नहीं, खाली राजनीति कर रहे हैं। इसी कोल्हापुर में पिछले साल मुझे लगता है एक सोशल मीडिया पोस्ट पे दंगे भी हुए थे। हाँ? तो क्या है, कहाँ है शिवाजी महाराज? तो छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। तो क्या हुआ? सभी धर्म के लोगों के साथ थे शिवाजी महाराज। तो फिर अभी क्या हुआ? डिवाइड कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में डिवाइड, ऐसे हिंदू मुस्लिम में डिवाइड है। डिवाइडेशन का माहौल बना रहे हैं। पहले कोल्हापुर का ऐसे नहीं था नाम, कभी राजनीति इधर जातिवादी ऐसे कभी नहीं था। पॉलिटिक्स नहीं चल रहा है. नाही पण इथे मराठा बनाम ओबीसी, हिंदू बनाम मुस्लिम हे सुरू झालंय. हा, ते नव्हतं कधी तिथं. ते नव्हतं कधी, आता सुरू झालंय. आता सुरू ह्या 5-6 वर्षात चेंजेस झाले थोडं. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे एका प्रमाणाने त्यांचे आदर्श होते, आजचे नेता ते पालन करतात की नाही? अजिबात नाही. हा, अजिबात नाही. अजिबात नाही. काय पालन करतात? छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार वेगळे आणि आता नेत्यांचे विचार वेगळे. आता नेता पैसे टाकले तरच मतदान करतोय माणूस. ते पैशाच्या जीवावर सगळा खेळ चाललाय तर कशाला उभा राहायचं मग? ते तुमच्या वोट पैशाहून वोट घेतात, तुमच्या समोर पैसे टाकतात. म्हणजे काय, आता लाडकी बहीण आणली, हे पैशाचं राजकारण आहे की? हे आजचे नेते छत्रपती शिवाजी महाराजांचं फक्त नाव घेतात की त्यांच्या आदर्शावर काम करतात? काही जण आदर्शावर काम करणारे आहेत, काही जण नुसते नाव घेणारे आहेत. असे दोन्ही प्रकारचे आहेत. हा, कोण आदर्शावर काम करतात की फक्त पैशांची राजकारण आहे? पैशांचं तर आहेच, राजकारण पैशांचं तर आहेच. मग हे काय 100% न 1,01% आहे. पण कसं आहे माहिती काय, काही आहेत थोडे बहुत बोटावर मोजणे इतके. तो ये मुझे बताइए, कोई भी नेता जो है महायुति से या महाविकास आघाड़ी शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श पे चलते हैं कि नहीं? महाराज के आदर्श पे क्या चलते हैं क्या? ये नहीं, एक का भी नहीं है. छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने का भी लायकी नहीं है. किसी भी नेता का, किसी भी पार्टी से, किसी भी पार्टी वो किधर, ये किधर, वो किधर. वो रस्ते कसे आहेत? खड्डे आहेत का जास्त? खड्डे जास्त आहेत, रस्ता कमी आहे. चला, व्हेरी गुड. First stop here in Sangli is at the Vasantdada Shetkari Sahkari Sakar Karkhana. So the cooperative society named after the late Vasantdada Patil, who, as I said, was a 4-time chief minister of Maharashtra and a real strong man of the Congress at the time. Remember, sugar politics is linked to political patronage in places like Sangli. There were once 14 sugar factories here, but a number of them are now turning dysfunctional, allegedly because of mismanagement. But their political clout remains intact. तुम्ही सगळे शेअर होल्डर्स आहात, तुम्ही शेअर होल्डर्स, कॉपरेटिव्ह मध्ये सगळे शेअर होल्डर्स, शेतकरी आहात तुम्ही. तुम्हाला बरोबर दाम मिळतं की नहीं? नहीं. पर एक जमाने में जब वसंत दादा पाटिल थे तो आप पूरी तरह से उनके साथ थे. अभी भी है. उनके परिवार के साथ. हाँ, वसंत दादा का टाइम और आज के टाइम में क्या फरक है? भरपूर फरक. हा, नीतीमध्ये. आणि त्या काळात काय व्हायचं? काय सुद्धा नाही. दर चांगला भेटत होता, आता दर भेटत नाही. इज इट दो प्रॉफिटेबल टू डू शुगर केन फार्मिंग और नॉट? No, at present it's very प्रॉफिट difficult. तरी असेल. Profit, it's no profit, no loss business. अच्छा, एक मला विचारायचं आहे आपल्या सगळ्यांना, पॉलिटिक्स इथे नेहमी काँग्रेसचा एक जोर आहे, अजून आहे की आता कमी झालाय हळूहळू? वसंतदादा, फार कमी झालाय. कमी झालाय. पहिल्यापेक्षा कमी आहे. का कमी का झालाय? Because of this सहकार only, because of this corporate sector only. It has become less. Less. Because now the cooperatives are not run as efficiently as in the past. Okay, now we spoke to, of course, some of the shareholders of this cooperative. They are the farmers of the sugarcane fields. But what about the people who work in the sugarcane fields, the sugarcane laborers? And this is a story in itself. Most of them have migrated from Beed district. तुम्ही सगळे बीडचे का? किती मिळतं तुम्हाला एका आम्हाला 373 रुपये दिवसाचे? वर्षाचे किती करता मग? किती महिने राहता इथे? तसं नसतं. तुम्ही पण सगळे बीडून यंग काय, तुम्हाला काही दुसरी नोकरी नाही मिळत का तिथे?
सर हे म्हणजे नोकऱ्या म्हणजे विषय कसा आहे आमच्या इकडे जी एक काय विषय झालाय आरक्षणामुळे याच्यामुळे थोडं म्हणजे आम्हाला टक्केवारी जरी असेल तरी तुम्ही काय मराठा आहात? आरक्षण जोपर्यंत मिळालं नाही तुम्हाला काही सरकारी नोकरी काही मिळत नाही. काय नाही काय किती मिळतं दिवसाची इथे राहून? इथे म्हणजे काय लाख 1.25 लाखापर्यंत जाते. 4 महिन्यासाठी 1.25 लाख 4-5 महिने राहता. बाकी वर्षासाठी काय करता? बाकी वर्षासाठी काय बाकी आता पाणी नसल्यामुळे काय करता येत नाही ना. पाणीच नाहीये तिथे. पाणी नाही बिलकुल. पाणी प्यायची वांदी म्हणून आम्ही इकडे येतो ना. मग असंच करणार दरवर्षी? काढावं लागणार तोपर्यंत काही तुम्हाला आरक्षण पाहिजे. गन्ने का जूस है, 1 गिलास गन्ने का जूस. व्हेन यू आर इन शुगर केन कंट्री कम से कम उतना तो करना चाहिए. नहीं बर्फ नहीं. Sangli will be in a way remembered and etched with the memory of Vasantdada Patil. Someone needs to write perhaps a fine biography of the late Vasantdada Patil. Meanwhile, I'm going to enjoy my sugarcane juice. Rajdeep Sardesai in Sangli for Maharashtra Masa. How are you? I'm fine. Now, welcome to Solapur, Rajdeep. Very welcome to Solapur. I have a few friends here. Yeah. Mr. Sharma is my old friend. Yeah. Heads a cooperative bank or part of a cooperative bank. Sure. And many years ago we met and we are still friends. क्या सोलापुर में क्या बदला है? सोलापुर में कुछ नहीं बदला है. मैं कितने 15 साल हो गए? 1995 में आए थे, तब से लेके आज बहुत कुछ ज्यादा नहीं बदला है. नहीं बदला है. बहुत कुछ ज्यादा नहीं बदला है. अच्छे के लिए कुछ बदला नहीं है. अच्छे के लिए क्या बदला है? कुछ नहीं, कुछ नया इंडस्ट्री नहीं आ रहा है. कुछ नहीं, नया इंडस्ट्री नहीं आ रहा है. कुछ नहीं. पुराने यहाँ तो एक टेक्सटाइल मिल का हब था. टेक्सटाइल मिल का हब था, वो भी अब बंद हो रहा है. पुराना जो यहाँ का मशहूर जेकॉर्ड था, वो बहुत से उसके कारखाने बंद पड़े हैं. उसकी जगह टर्किश टॉवेल आ गया है. बीडी उद्योग जो था लेबर इंटेंसिव, वो भी बंद हो गया है. धीरे ये बड़ी सोलापुर रिमेम्बर वॉज एन इम्पोर्टेंट बीडी मैन्युफैक्चरिंग स्पेस इन महाराष्ट्र. तो वो भी बंद पड़ रहा है. और कपड़े की दुकान क्यों बंद, कपड़े के टेक्सटाइल मिल्स क्यों बंद पड़ रहे हैं? 3 यहाँ के मेजर मिल थे. वन ऑफ द लार्जेस्ट मिल, जूनी मिल, विच यूज टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म क्लॉथ फॉर द अलाइड फोर्सेज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2. आई सी. वो भी बंद हो गया लेबर प्रॉब्लम की वजह से. धीरे धीरे सभी बंद हो गए. एंड पीपल आर माइग्रेटिंग आउट ऑफ सोलापुर. पीपल आर माइग्रेटिंग आउट ऑफ सोलापुर. इवन टेक्सटाइल बिजनेस हैज माइग्रेटेड टू आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग Chandrababu Naidu's regime. He offered. Yeah, you are close to Andhra Pradesh, you are close to Karnataka, so you have lost out to Andhra Pradesh, you have lost out to Karnataka. Surely, yeah, we lost. Hi, Sharma ji, you are not giving me any good news about Solapur. No, all the young generation, no one is ready to live in Solapur. They are all migrating to Bangalore, to Pune, to Mumbai, to Hyderabad for jobs. No job opportunities there. नमस्कार, यंग जनरेशन की बात हो रही है. कैसे हैं? Where are you all from? सोलापुर? शर्मा जी मला सांगते थे यंग जनरेशन सोलापुर सोडून जाते हैं. आप लोग सब छोड़ रहे हैं सोलापुर, क्यों? पुणे में जॉब नहीं है. जॉब नहीं है सर. कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है. पड़ता है यहाँ पे. जो जॉब है वो कम देता है, पैकेजेस वगैरह, तो उतने में कुछ होता नहीं है. तो बाहर जाके अच्छा मिलता है. ये सर सेम. यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा नहीं है. पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, everywhere, but not Solapur. Okay, for the last few days, as I've crisscrossed Western Maharashtra on chopper, the sense I get is that the 70 seats of this region could prove decisive in the final analysis. It's very difficult to make any predictions because this region is deeply fragmented. District by district, there are local satraps who could well decide the fortunes of candidates and parties. People tend to vote here for candidates more than parties. The fact that the NCP has split wide open, the fact that there are so many rebels makes it even more hazardous to guess what Western Maharashtra will do. This has been a socially and relatively economically progressive area of Maharashtra, but like much of the rest of Maharashtra, it's also slowly fragmenting. That's going to be my big takeaway, quite apart from who wins the election here. This is Rajdeep Sardesai for Maharashtra Maza.